Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the methods of animal nutrition. So let's move to the light board. So dear students, nutrition in animals. So we were discussing the methods of animal nutrition. And we have discussed certain methods like we have discussed number 1, the dietary rewards. Number 2, we have discussed the herbivores. Number 3, we have discussed the carnivores. Number 4, we have discussed omnivores. Number 5, we have discussed the filter feeders. So these 5 methods of animal nutrition have been already discussed. So today we will discuss another method, that is the fluid feeders. The animals which ingest food in the form of fluid are called the fluid feeders. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक जो है वो फ्लूइड की शक्ल में उसको हासिल करें, फ्लूइड पिएं और उसको इंजेस्ट करें, उनको कहा जाता है द फ्लूइड फीडर्स. वी हैव 2 एग्जांपल्स रिगार्डिंग द फ्लूइड फीडर्स. और ये कॉमन है, आपने नाम भी सुना हुआ है. Number 1 are the aphids and number 2 are the mosquitoes. So these are the animals which ingest their food in the form of fluid. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? Aphids, these are small animals which have tube-like parts called stylet, which is inserted into the soft parts of plant
up to phloem. From where they suck the food in liquid form. तो dear students, aphids, these are small animals जो कि प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, इसका आपने चैप्टर नंबर 1 में भी डिटेल से पढ़ा था. एफिड्स जो कि वॉलनट जो होते हैं उनकी ट्रीज, उनको वहाँ पर ये उनकी फ्लोएम के अंदर इंसर्ट करते हैं अपनी, जिस तरह से वो उनका माउथ पार्ट्स जो होते हैं, ट्यूब लाइक पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज स्टाइलेट. ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. स्टाइलेट उनको कहा जाता है, विच आर इंसर्टेड इनटू अप टू द फ्लोएम लेवल. और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में भी आप डिटेल से पढ़ेंगे कि जो स्टाइलेट है वो फ्लोएम में इसलिए इंसर्ट की जाती है क्योंकि फ्लोएम के अंदर मौजूद है वो सारा ऑर्गेनिक फूड जो कि फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक्स. तो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ से बनने के बाद वो सिंक्स के अंदर जो है, यानी कि जो फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स होते हैं या फूड स्टोरिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है और ये रास्ते में वहीं से उसको विद द हेल्प ऑफ द स्टाइलेट उसको वहाँ से सक कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो फीडिंग की जा रही है वो एक लिक्विड की फॉर्म में की जा रही है, इस वजह से द एफिड्स दे आर कॉल्ड एज द फ्लूइड फीडर्स. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मॉस्किटोज. मॉस्किटोज में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कौन से मॉस्किटोज, अगर हम बात करें ह्यूमंस के हवाले से, सो द फीमेल इनोफिलीज. आपको याद होगा आपने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था. सो फीमेल इनोफिलीज इंसर्ट्स its tubular part into the superficial capillaries of skin and suck the blood from the capillaries of humans. और इसी तरह से डियर स्टूडेंट द क्यूलेक्स, जो फीमेल क्यूलेक्स होती है वो बर्ड्स के अंदर ख़ास तौर पर उन वहाँ से उसको जो उसकी स्किन के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से ब्लड को सक करती है. तो यहाँ पर ब्लड को सक किया जा रहा है. ब्लड क्या, इट्स अ लिक्विड, इट्स अ फ्लूइड. तो यहाँ पर भी जो फीडिंग हो रही है वो फ्लूइड के ज़रिए हो रही है. और इसके हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो प्रीवियसली हम पढ़ भी चुके हैं रिगार्डिंग द मलेरियल पैरासाइट और उसके जो सारा वो साइकिल था प्लाज्मोडियम का. सो ऑल ऑफ दैट क्लियर. और आपको ये भी पता है कि ये जो ब्लड को सक करने से पहले वहाँ पर स्किन के ऊपर सलाइवा इंसर्ट करती है. सलाइवा जो है वहाँ पर जहाँ पर इसने वहाँ पर वोंड करना है, ज़ख़म बनाना है, जहाँ से उसने ब्लड को सक करना है, उसके अंदर मौजूद होता है एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट ऐसे केमिकल को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. आपको पता है कि जैसे ही ब्लड हमारी ब्लड वेसल से बाहर आता है तो वो फौरी तौर पर क्लॉट हो जाता है. और अगर ये क्लॉट हो गया इनके माउथ पार्ट के या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा. लेकिन इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक मैकेनिज्म रखा, दैट इज़ ही हैज़ प्रोवाइडेड them with an anticoagulant. और वो anticoagulant क्या करता है, वो at the site of piercing वहाँ पर मौजूद होता है. जैसे ब्लड सक किया जा रहा होता है उसके अंदर मिक्स होता रहता है और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है. सो शी कैन ईजिली सक द ब्लड. और फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा हमें रैशेस भी होते हैं, हमें यहाँ पर इचिंग भी होती है. और वो भी आपने पढ़ा था किस वजह से इचिंग होती है. दैट इज़ ड्यू टू सर्टन केमिकल्स रिलीज एट द साइट ऑफ सकिंग ब्लड. सो
उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई मॉस्किटो में काटता है तो हमें वहाँ पर खारिश होती है और वहाँ पर एक छोटा सा एक दाना सा बन जाता है जिसको हमने कहा था वेल्ट्स. So that was about the fluid feeders. Now I'm going to discuss this another mode of nutrition in animals that is called as macrophageous feeding. So dear students, you are familiar with this term macro. So macro means big and phage means to eat. So this is a kind of the animals food in the form of large pieces. So that kind of feeding is called as macrophagous feeding. बड़े बड़े पार्टिकल्स की शक्ल में जो फूड होगा उसको बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया जाएगा बाय दिस एनिमल्स. और मैक्रोफेजस फीडिंग में 3 एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स हमारे बुक में डिस्कस हुई हैं. So first of all, tentacular feeding. Number 2 is scraping feeding. And number 3 is seizing and swallowing feeding. So these are the 3 various examples which have been discussed under the heading of macrophagous feeding. So dear student, tentacular, it is a word which is derived from tentacles. और आपने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है इस, और आगे चल के हम पढ़ेंगे भी. You are familiar with Hydra. So here is Hydra, a vase-like body animal. Chapter number 10 में डिटेल से डिस्कस हुआ. Diploblastic animal having only one opening, the mouth, and one cavity which is called as gastrovascular cavity, and at the end of this there are present numerous structures which are called as tentacles. So these are tentacles. और आपने पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ cells होते हैं, cnidocytes. So these are the tentacles. जैसे ही प्रे आएगा ये टेंटैकल्स उसको कैप्चर करेंगे एंड देन द टेंटैकल्स पुट दैट वेरी प्रे टुवर्ड्स द माउथ, और फिर इस तरह से उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टेंटेकुलर फीडिंग. क्लियर? नाउ द स्क्रैपिंग फीडिंग. स्क्रैप का मतलब होता है खुरेदना, किसी चीज़ को खुरेदना. तो इसकी एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा था that there was a snail having a shell, coiled shell, and muscular feet over here. So that is a snail, garden snail, which is called as Helix aspersa or snail in common language. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें किस तरह से आपने वो डिटेल के साथ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया गया था कि लिप्स होती हैं. सो हियर इज अ लीफ, अ बिग लीफ, और ये वहाँ पर लिप्स की मदद से ये लिप्स वहाँ पर अपने अटैच कर लेती है.
ये ऊपर से आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ, बड़ा सा मैक्रो इसको एनहांस करके। और these are the lips which are attached to the leaf, और फिर इनकी एक ख़ास किस्म की इनके अंदर एक टंग होती है, आपको याद आ गया होगा, दैट इज़ रेडुला। इसके यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। सो दैट इज़ द टंग, और इस टंग के ऊपर छोटे छोटे टीथ मौजूद हैं इस तरह से। सो विद द हेल्प ऑफ लिप्स, ये लिप्स वो जो उसके साथ लीफ के साथ अटैच कर लेती है, वो स्टिक करेगी, और फिर ये टंग है विच इज़ कॉल्ड एज रेडुला, ये क्या करेगा, इट मूव्स टू एंड फ्रो। और जैसे ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, जैसे लाइक वो जैसे आरी ब्लेड होता है, उसके साथ आप ऐसे उसको काटते हैं तो उसमें से उसको काटता चला जाता है और उसमें से स्क्रैप्स बनना शुरू होते हैं। इसी तरह से जो ये लीव्स होते हैं, इसके छोटे छोटे ऐसे स्क्रैप्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड उसके बिहाइंड देयर इज द माउथ, और उसको ओरल कैविटी के अंदर पुश कर दिया जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर दीज आर द स्क्रैप्ड लीफ पार्ट्स, ठीक है, ये सारे दीज आर स्क्रैप्ड लीफ पार्ट्स, और ये इसकी टंग है रेडुला, इसकी मदद से टू एंड फ्रो इस तरह से मूव किया जाएगा, और उसे स्क्रैप करके इस पत्ते से जो पार्ट्स हैं उसको इट इज़ पुश्ड बैक इनटू द ओरल कैविटी। वहाँ से फिर इसको आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पुश करने के बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको मज़ीद डाइजेस्ट करेगा। सो दैट काइंड ऑफ मैक्रोफेजियस फीडिंग इज कॉल्ड एज द स्क्रैपिंग फीडिंग। Now the third category is seizing and swallowing. Swallow का मतलब होता है निगलना, जस्ट आप किसी चीज़ को च्यू ना करो, उसको जस्ट निगल जाओ, दैट इज कॉल्ड एज swallowing। और सीजिंग का मतलब होता है ऐसे झपट कर, पहले झपट कर किसी को पकड़ना, फिर उसके बाद उसको swallow कर जाना, दैट काइंड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड एज seizing and swallowing, which has been seen in a spotted dogfish. Here is a fish which is called as spotted dogfish. इसके स्किन के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स मौजूद होते हैं। These are some spots. So that is spotted dogfish. तो वाटर के अंदर ये अपने प्रे को जैसे इसको नज़र आता है, ये बिल्कुल स्लो हो जाती है, और फिर उसके ऊपर प्रे के ऊपर नज़र रखेगी, और सडनली उसके ऊपर ऐसे अटैक करेगी। अटैक करने के बाद जैसे ही वो उसके माउथ के अंदर आ जाएगा, उसको एज इट इज़ वो स्वेलो करके और इसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर लेगी। सो दैट काइंड ऑफ मैक्रोफेजेस, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पुट कर लिया जाता है। सो दैट काइंड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस फीडिंग, यानी जैसे जैसे वो बड़े बड़े पार्टिकल्स एज अ होल लार्ज पीसेस की शक्ल में जब किसी चीज़ को इंजेस्ट किया जाएगा, that kind of feeding is called as macrophagous feeding. Clear? Now, here is another methods in the animal which has been discussed in our book, that is parasitic nutrition. So dear students, you are very much familiar by this term, the parasite. So what is a parasite? Parasite is an organism which depends upon the host for food and shelter and in return harms the host in the form of disease, that is called as a parasite. बहुत ये आप फेमिलियर हैं इस टर्म से, प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा था, और इस बुक के अंदर भी, इस ग्रेड के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इन चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 5 at various places we have discussed. So dear students, parasitic nutrition.
अब पैरासाइट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अपॉन लोकेशन, हम लोकेशन की बात करें, फिर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो दोनों के बिहाफ के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पैरासाइट्स होते हैं। सो पैरासाइट्स अपॉन body location, they have been discussed like the ectoparasites. So ecto means outside. ऐसा parasite, the parasite which lives upon the body of host. Upon means outside, ठीक है, outside the body of the host, that is called as ectoparasite. Here we go for its examples. Examples include fleas, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पिस्सू, इसी तरह से टिक्स, जिसको हम कहते हैं चिचड़, जो कि ये एनिमल्स की फर के अंदर वो घुस जाते हैं या उनके फेदर्स के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से फिर ब्लड सक करते रहते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये जैसे कुर्बानी के जानवर जो होते हैं आमतौर पर उनके ईयर्स के पास और ख़ास तौर पर या जो डॉग्स होते हैं उनके ईयर्स के पास और उनकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर अटैच हो जाते हैं, दे गेट स्टिक टू देम। इस तरह से माइट्स, ये भी these are the parasites which attach on the outside of the host. And leech, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिटेल के साथ। लीच जो होते हैं, जोंक जिसको बोला जाता है, ये अपने होस्ट की बॉडी के बाहर विद द हेल्प ऑफ सक्कर्स ये अटैच होती है और ये ब्लड को सक करती है, ठीक है। और फाइलम एनालिटा के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था लीच को। सो दीज आर द लाइक मॉस्किटोज, mosquitoes, they are also the ectoparasites, and like aphids, अभी हमने डिस्कस किया, they are also the ectoparasites. Now the entoparasites. So dear students, endo means inside. तो ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर उसको नुकसान पहुंचाएं, वहां से खुराक हासिल करें, अपने आप को फीड करें, दे आर कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट्स। सो द पैरासाइट which lives inside the body of host is called endoparasite. और इसकी भी एग्जांपल्स हमने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद भी होंगी। लाइक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर इन प्रोटोजोन्स अमीबा के अंदर, विच ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इट कॉजेज डायजेंट्री। इसी तरह से हमने पढ़ा था एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, जिसको हमने कहा था दैट इज अ पिनवर्म, जो आमतौर पर रिजाइड करता है कॉलन, सीकम और एनस के अंदर। आपको याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था हमने। इसी तरह से हमने पढ़ा था एनसाइक्लोमेटा, एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेल। ये सारे मैं साइंटिफिक नेम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और इनको हमने अंडरलाइन भी करना है एज द साइंटिफिक नेम्स। सो Encyclostomata duodenale, that is basically the hookworm. So hookworms, tapeworms, roundworms, all these are the examples of endoparasites. ये आमतौर पर
जो है जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वहाँ पर रिजाइड करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, we have another classification, facultative parasites. So these are the parasites which can live with or without host. ऐसा पैरासाइट जो होस्ट के अंदर भी रह सके और होस्ट के बगैर भी रह सके, उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। और एक चौथी कैटेगरी है that has been discussed, it is the obligate parasite. So the obligate parasites, these are the parasites which live all the times in host. Means they cannot live without the host. They cannot live without host, are called as the obligate parasites. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।